Previously on Maya. Then why the hell are you so possessive about me? मैं बहुत हेल्पलेस हूँ। मैं जब भी किसी और लड़की को तुमसे नजरें मिलाते देखती हूँ तो I feel like plucking her eyes out. I'm just real estate. दिया खन्ना की private property. Well, to be honest, I'm a dominant. Like you're a submissive. Maya, मैं उतना ही तन्हा हूँ जितनी तुम हो। वेडनेसडे दोपहर को मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा उसी मॉल के फूड कोर्ट में। अगर ये आइडिया तुम्हें एक्साइट नहीं करता तो मुझसे मिलने कभी नहीं आती। I shouldn't have come here. मुझे यहाँ से जाना चाहिए। One moment please. मैंने एक ईमेल आईडी बनाई है mayaandrahul@gmail.com. I will post a fantasy in the draft section. हर रोज एक हफ्ते के लिए। बहुत सुन ली दुनिया की, अब अपनी बॉडी की सुनो। मैंने सोचा था कि गोवा आके I'll be able to run away from him. बट मैं जितना उससे दूर भागना चाह रही थी उतना ही वो मेरे करीब आ रहा था। बेबी आई एम सो सॉरी। For what? नहीं, वो पूरा दिन कॉन्फ्रेंस में बिजी रहता हूँ ना। लिटरली नो टाइम टू टेक यू आउट। It's okay, Abhi. I knew you were going to be busy here. But I like it. It's nice. You know, if you want, I can hire you a car. You could go sightseeing or shopping, perhaps. नहीं अभी I'm fine. Trust me. You do your work here. I just want some me time, and it's perfect. Okay. But if you change your mind, I want you to tell me. All right? I will. Bye. Bye. Now imagine the evening light of the sun burning through the curtains. You're wearing a pretty white dress with white heels. मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे तुम comfortable feel नहीं करोगी. But yes, I'll push you to your limits. You have 2 safe words. Yellow, if you want me to slow down. Red, if you want me to stop. If you don't like what I'm doing, use these safe words. But Maya, the most important rule of this relationship is that if you ever, I mean ever, not obey me, then this relationship of surrender and control is over. You know, Maya, what is the greatest thrill of this relationship of surrender and control? It's fear. And the excitement of the unknown. तुम्हें नहीं पता what will happen to you next, या फिर what I will do to you next. That is the thrill. So tell me, Maya, do you want to feel it?
Do you know where I'm going to kiss you next, Maya? I mean, what part of your body? On your lips? Or on your back? On your neck? On your breasts? Or on your legs? How does it feel now, Maya? I like it. It's like my whole body's on fire. Just a blindfold. Just a blindfold turns your whole goddamn body on fire, Maya. That is the thrill. The thrill of the unknown. Now imagine what should happen when I kiss you, and it doesn't matter where. Hi. Wow. You look beautiful. And your skin. It's glowing. It's as if you're on some kind of fire. I'm glad you came to go out with me. जानती हो कब से बंधी हुई हो? पूरे 40 मिनट से। If I touch you, will you orgasm? Yes. Then beg me. Please. Please touch me. Beg me, Maya. Louder. Please. Please touch me. Louder, Maya. Louder. Touch me, please. Beg me more. Touch me, please. Come on, Maya. Touch me, please. Please touch me. Beg me more. Please, please, please. Today we start a new relationship, Maya. Me as your dominant and you as my submissive. We'll be sharing a bond like no other. Rules तो तुम्हें पता ही हैं. मेल में लिख के भेजे थे. But इस relationship की शुरुआत से पहले
मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है that you're completely ready for this. So tell me, Maya, are you ready to completely surrender yourself? I'm ready. I was reading this page and it was here on this page, Abhi. This bastard, he's the reason why Sonia's so messed up. But how can you be so sure about it? The timeline's mad, Shalini. जिस दिन ये अरेस्ट हुआ था, it's the same day that Sonia had a panic attack. The other day when she had a blackout, she was reading the newspaper. She was reading his article. See, a name like Rahul is very common. And you just can't accuse someone like this. And what proof do you have ye wahi Rahul hai? Shalini, it's evident. All right? I'm convinced it's him. तुम्हारे कन्विंस होने से क्या होता है? I understand your anger. But you just can't go accuse everyone जिसका नाम राहुल है. इस न्यूज़पेपर में तुम्हें 10 नाम दिखा सकती हूँ जिसका नाम राहुल है. Please मत जाओ. Please मत जाओ. अभिषेक. Stop! Don't go. Abhishek. Just stop! Don't go. Stop it! आपकी वाइफ के अलावा एक और विटनेस है आपके खिलाफ. What? Witness to what? Who is it? इसे जानते हैं आप? हाँ, जानता हूँ इसे, लेकिन इसका नाम याद नहीं है. राकेश नाम है इसका. और क्या कहा इसने? पहले आप ये बताइए कि आपका इसके साथ क्या लेना देना है. Do you believe life has a ripple effect? Please tell me, this isn't yours. Why the hell you're going through my laptop? So this is your shit. You're such a pervert bastard, Mr. Singh. Such a pervert fucking bastard. You're overreacting, Diya. I'm overreacting. तुमने वो pictures देखी है? Bloody disgusting. I understand. Men like porn. But ये? छी! तुम मुझे एक बात बताओ राहुल. When you make love to me, क्या तुम ये सब सोचते हो? Is this what lovemaking is to you? Diya, it's about a sexual preference. And it's normal. It's not normal. किसी और को दर्द देके खुशी पाना, it's not normal. It's not about dard. It's about control and surrender. So your life is so fucking out of control that you need to tie a woman and control her. मैं नॉर्मल नहीं हूं, पर क्या तुम नॉर्मल हो? You need the lights to be out. You need me to be quiet. You lie on the bed as if you're a dead body while we are making out. Is that normal, Diya? Who in the hell are you to tell me what normal and abnormal is? You're fucking sick. Sick? Oh yeah, I am sick. You know what I'm sick of? I'm fucking sick of being judged.
I'm sick of hiding what I crave for. And I'm fucking sick of your two-faced society which does everything in private, but in public, they go he and haw. And I'm sick of your society of threesomes and foursomes who behave in public like they've never ever seen a naked lady. I'm sick of those few who decide for many of us what normal and abnormal is. You want to know what normal is, na? Normal is whatever two consenting adults do in the privacy of their bedroom. And you know what, Diya? No fucking one in this world has any fucking right to decide what's right and wrong for them. Is there someone you're doing this with? मेरे सवाल का जवाब दो. Are you doing this with someone? No. Rahul, it's not about sexual preference. It's about wants. जब दो लोग जो साथ होते हैं ना, अलग चीजें चाहें, तो वो अलग चाह उन्हें अलग कर देती है. Don't you dare want anything or anyone but me. Morning, sir. Morning. Sir, there's a packet for you inside. I've kept it on the table. Please have a look now. Bastard. I'll destroy him. डैड आपने ऐसा किया क्या है कि सलीम हमें जान से मारने की धमकी दे रहा है? मैंने बस कुछ लोग भेजे थे उसके यहाँ, उसे धमकाने के लिए कि अगर उसने हमारा ऑफर मंजूर नहीं किया तो हमें दूसरा सलीम पैदा करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा. उसे याद दिलाना जरूरी था कि पैसे का पावर हमारे पास है. डैड, मुझे लगता है हमें ये सब में नहीं फंसना चाहिए. We should go to the government and pursue this matter legally. नहीं, सलीम ने मुझे जान से मारने की धमकी देकर बिजनेस को पर्सनल बना दिया है, मेरी इंसल्ट की है. सलीम भाई की भाईगिरी को निकालने का वक्त आ गया है. गो फाइंड गणेश, उसके साथ जाओ, उसे पता है क्या करना है. अब इधर ही बैठिए, मैं भी आता हूँ. आभारा. सलाम साहब. ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? मार क्यों रहे हो उसे? अरे साहब मारने दो ना साहब, परमिशन दिया मैंने साहब. अरे मेरे परिवार को पैसा मिलेगा साहब, क्यों मेरे पेट को लात मार रहे हो साहब? मारो साहब, मारो. हेलो, विक्रोली पुलिस स्टेशन. यहाँ पे हिट एंड रन का केस हुआ है. बहुत बुरी तरह जख्मी है बेचारा. हाँ साहब, देखा, गाड़ी देखा मैं. सफारी थी, काली कलर की, नंबर
MH02 BR7148। हाँ सर, एक लंबा आदमी था, थोड़ा मोटा सा। जी सर, जी सर। This is the world we live in, जहाँ किसी की गरीबी और लाचारी का फायदा उठाकर किसी और को उसके मारने के जुर्म में फंसाती है। ये है मिस दिया खन्ना की सोसाइटी that looks down upon me, thinks I am not normal, I am the pervert, I am sick. I understand. तुम्हारे फादर इन लॉ ने पैसे देके राकेश को तुम्हारे खिलाफ गवाह बनाया, ये प्रूव करने के लिए that you had motive to kill Salim. They're very clever. धीरे धीरे they're building a very strong case against you. And the ripple effect? तब तक सोनिया और मेरी सीक्रेट लाइफ और सलीम भाई के साथ जो हो रहा था वो दोनों अलग अलग कहानियां थी। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि बहुत जल्द वो दोनों कहानियां जुड़ने वाली थी। मैं ये नहीं जानता था कि बहुत जल्द सारी दुनिया सोनिया और मेरे बीच दीवार बन के खड़ी होने वाली है। हवा के झोंके सा कोई लम्हा। If you like this episode, please press like, please share, and hit that little red and white button and click subscribe. Your subscription is the invaluable appreciation that we crave. Thank you. नम आँखें हैं, दिल गमज़दा है। मैंने मांगा क्या और क्या मिला?